The way teachers give instruction in the classroom is a very important aspect of teaching and learning and is a very important classroom management approach. Let's see what we mean by instruction. Teaching and learning that goes on in the classroom is based on some defined principles that are used by the teacher. अब जो इंस्ट्रक्शन है, जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है, जो पढ़ाने का तरीका है, अगर वो हम स्टूडेंट्स की नीड्स एंड इंटरेस्ट पे बेस करेंगे, स्टूडेंट्स जो है वो उतना ही उसमें इंटरेस्ट लेगा. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a teacher needs to be very focused and a teacher must align the curriculum objectives according to the needs and interest of the students. जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन होगी, उतना ही ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो अपनी लर्निंग में इन्वॉल्व्ड होगा. और जब वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो जाहिर है कि फिर क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज होंगे. सो in order to decrease problem behavior in the classroom, it is extremely important for the teacher to focus on the lesson. यहाँ पर बात कंटेंट नॉलेज की और पेडागोजिकल नॉलेज की आ जाती है, जो के हेल्प करते हैं इन मैनेजिंग द क्लासरूम. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बुनियादी बात है कि टीचर को नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ाने वाला है. दूसरी बात पेडागोजिकल नॉलेज की है, ऑन विच इज बेस्ड इंस्ट्रक्शन. So content knowledge together with pedagogical knowledge ensures effective instruction in the classroom and decreases problem behaviors in the classroom. Instruction requires what? सबसे पहले instruction requires a positive climate, which means that the conditions in the classroom should be conducive to learning. Classroom का जो माहौल है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो तालिब इल्म है वो अच्छे तरीके के साथ इंटरेस्ट लेकर पढ़ें. सो देयर हैज टू बी अ पॉजिटिव क्लाइमेट जहां पर टीचर और स्टूडेंट की गुड रैपो बिल्डिंग है. द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर ऑल्सो इन फुल कंट्रोल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल once the classroom climate is positive. The conditions are ripe for teaching and learning. इसके अलावा instruction involves the selection of the relevant content. That is very, very important. It is very important to understand that the teaching content should be age appropriate and should also be based on the needs and interests of the learners. ऐसा content अगर आप select करें जिसका student के context के साथ ताल्लुक नहीं, जो student की age से बढ़कर है या बहुत simple है उसके लिए, तो जाहिर है कि student उसमें interest जो है वो नहीं लेगा. और जब स्टूडेंट क्लासरूम प्रोसीडिंग्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर द ओनली आउटलेट इज दैट ही और शी विल बी इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर. सो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड अगेंस्ट दीज प्रॉब्लम्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द कंटेंट. आप पढ़ा क्या रहे हैं, आपका मटेरियल सिलेक्शन क्या है, क्या वो इस तरह का है जिससे स्टूडेंट जो है वो अट्रैक्ट हो और वो फोकस करे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन the other important thing is in instruction is that you make use of appropriate teaching and learning strategies. Again, यहाँ पर बात pedagogical knowledge की आ गई. So content knowledge together with pedagogical knowledge ensures good instruction in the classroom. ये बहुत जरूरी है कि जब आप कोई content जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, आप choose करते हैं अपना content, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना जो कंटेंट है उसको बेस करें नीड्स एंड इंटरेस्ट के ऊपर और देखें कि आया इस कंटेंट को पढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं और क्या वो तरीके जो हैं वो स्टूडेंट्स पसंद करेंगे या नहीं. ये बहुत जरूरी है. इसके अलावा यूज ऑफ रीजनेबल रूटीन्स एंड प्रोसीजर्स, विच मीन्स कि अगर आपका एक लेसन प्लान 35 मिनट का है तो उसमें कितना वक्त आप ग्रुप वर्क को देंगे, कितना वर्क आप इंडिविजुअल टाइम देंगे स्टूडेंट्स को काम करने के लिए, उसमें जो है वो सिलेक्शन ऑफ स्किल्स क्या होगी, कितना टाइम वो बैठ के काम करेंगे और कितना टाइम वो ग्रुप वर्क में जो है वो लगाएंगे. सो रीजनेबल रूटीन्स एंड प्रोसीजर्स नीड टू बी प्री डिसाइडेड. दे नीड टू बी प्री डिसाइडेड so that effective instruction can go on, which means the teacher needs to be absolutely prepared to conduct the lesson.
with her or his content knowledge, pedagogical knowledge, management knowledge, and also division of the lesson plan should be considered extremely important and should be divided very effectively within the time span that the teacher has.